Good morning. Am I audible? Please confirm. Yes, anyone of you? Yes. Okay, thank you.
Very good morning, one and all. A very warm welcome to the Transitional Curriculum Program 2022. On behalf of Jupiter Ayurved Medical College, Nagpur, I would like to request all of you, please stay connected. Our respected principal, sir, and respected secretary of our institution, respected Tarini Nikhare Madam, is joining shortly. We will start our session very soon. Very warm welcome to respected Anjali Rahatkar Madam. Very good morning. We will begin our session shortly. Good morning. Very good morning. Okay, how much time it will require? But Say within 10 2 to 3 minutes? minutes, we will start. Within 2 to 3 minutes, we will start, madam. Okay. Oh, thank you.
Apakah itu mas? रिकॉर्ड हो रहा है।
Welcome back. Very good morning once again. A very warm welcome to all the dear students, respected chief guest, respected principal, respected and honorable secretary of our institute. I welcome all on this transitional curriculum program of 2022. Before proceeding towards this session, I would like to request all of you to join together for the Lord Dhanvantari Stavan, and after that we will begin our session. I would like to share my screen and the Dhanvantari Stavan video, and then afterwards we will proceed to the session. Please join together. नमामि धन्वन्तरीरादिदेवं सुरासुरवन्दितपादपद्मं लोके जरारुक् भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्. I wish Lord Dhanvantari may bless you all with health, wealth, and prosperity. So, transitional curriculum has been designed by NCISM, that is the National Commission for Indian System of Medicine, especially for the first year BMS students, because till 12th you are in a different path or different subjects, and afterwards when you join the BMS course, there is a slight change in subject, the terminologies and all that. That's why since last year, that is since 2021, our commission has designed a special transitional curriculum through which the process of this transition, that is from the various subjects into the subjects of Ayurveda, will be easier for the students to understand, because a lot of terminologies, you can say the language differences is there. So to ease this transition, our commission has systematically designed this transitional curriculum program. So today we are starting this program with this inaugural session. So I would like to request our respected principal, Dr. Subhash Wage sir, for his keynote. Respected Subhash Wage sir. I think due to internet connection, he has lost his connection. He will join us shortly. Today we have among us the chief guest, Dr. Anjali Rahatgaonkar madam, who is the Honorable Director from Institute of Science, Nagpur. I would like to request our respected principal, sir.
Very good morning, sir. Very good morning, Shrikant. Very good morning, Anjali madam. It's so nice to see you on our platform. I would like to request, sir, please proceed with the inaugural address. We have finished the Dhanvantari Stavan and the short introduction. Okay. Please go ahead. It's been a wonderful morning today. It's so nice to receive the students in the today's college system. Actually, the Gurukul system, we start with the Vedarambha Sanskar, which we are going to actually perform physically when the students will arrive physically. Till then, as per the directives received from the National Commission for India's System of Medicine to conduct a transitional program for newly admitted students, we are conducting this transitional program. Why this transitional program? The basic idea behind bringing out this transitional program is that the students they learn all through their academic career the scientific terminologies which are prevalent in today's era, pertaining to physics, chemistry, biological sciences, and all of a sudden when they enter Ayurvedic discipline, Ayurveda, which is being the Indian medical science, and it has the terminologies which were prevailing in ancient era. I think our principal sir has lost his connection.
I think I lost my connectivity. Am I audible now? Yes, sir. Please go ahead. Am I audible? Okay. We were just discussing why this transitional program is being introduced by National Commission for Indian System of Medicine. So, because of the ancient medical terminologies which we are not used to today, so that this transitional phase from jumping from one science to another science, that should occur smoothly, and slowly the student should acclimatize to the condition, and should slowly they should digest these terminologies, and they get acquainted well with these terminologies. And that's why this idea behind transitional program came. Last year, we also conducted a transitional program for whole 14 days. And this year being, since admissions are done very late, we are cutting it little short. But we will cover most of the topics, and we will conduct in the spirit which NCISM expects from us. And I welcome all these students to this ancient medical course, which is supplemented with modern advances. The course is called as BAMS course, Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. I welcome you all in this course, and hope with my spirited team, I will be able to make you doctor in true sense. Our guest for this function today has arrived on our platform, and without taking you for the time, I will ask the our coordinator, Dr. Shrikant Hadwade sir, to introduce. Please introduce Anjali Rahadgaonkar madam, and then I will request Rahadgaonkar madam to deliver her guest talk. Thank you very much, sir. Honor to introduce our today's chief guest, respected Professor Dr. Anjali Rahadgaonkar madam, who is the Honorable Director of Institute of Science, Nagpur. She has done her PhD in Organic Chemistry from Nagpur University. She is having more than 25 years of teaching experience, as well as research leadership and research project management, and more than 10 years of administrative experience. She has pioneered in establishment of Institute of Forensic Science in Nagpur. To her credit, she has membership of many academic and professional societies like American Chemical Society, Royal Society Chemistry, and so on. She has also received many honors and fellowship like Fellowship of Royal Society of Chemistry, London. She has also received many awards, Best Teacher Award 2020, 2012 and 2013. To her credit, she has also published many research articles in international peer-reviewed journals. The biodata is too long because of her excellent activity in this entire science. So, with all these, I would like to request our respected chief guest, Dr. Anjali Rahadgaonkar madam, for our chief guest address. Over to you, Dr. Anjali madam. Thank you so much, first of all, the Jupiter Ayurvedic Medical College, Nagpur, for this transitional curriculum. All the respected dignitaries of today's function, and my dear students, ladies and gentlemen. Actually, this topic, that is a transitional curriculum, is really new to us because we are already in the science stream. So when we started from our high school learning, and we start from our the higher education, the terminology remains same. But for you students, because you require to change, there is a lot of change required. That is when we start with the terminologies, right? So when we are, am I audible?
Yes, ma'am. Please go ahead. Okay, so the students, I can see that how many students they have joined, and I think more than 50 students they have joined for this program. Yes, All of yes. you, you are from the Nagpur or you are from the outside? I need some interaction because without interaction, we are the teachers. So without interaction, I cannot proceed. Outside. Outside, okay. Couple of students can make their mic open so that we can have a good interaction. All right. So as far as the Ayurveda is concerned, we know that the anatomy is because this is a clinical and the medical terminologies, and you have to learn so many things. See, in the high school studies, the study is very much limited, and when you go for the higher studies, especially for this program, that is the BMS program, so you have to deal with several things. The first thing is you must have to learn the Sanskrit. Marathi samajhta? हो मैम मराठी. नहीं मैम. नहीं समझता? नो मैम. Okay. Yes मैम. समझता है. तो आपने ये स्टडी क्यों सिलेक्ट किया? I need some the answers from you students so that I can give you some suggestions. Why you have selected this program for your higher education? Anyone can explain, because all of you have selected this program for your higher studies. Nobody? Yes, Nobody anyone knows. of you? Nobody knows why they have selected this program for their higher studies. This is a very strange thing I can see. Okay, if you don't want to share with me, but do share with your mentors and your teachers. All right, because it is very necessary that whatever program or whatever the study program we are going to select, we must have some urge to learn about the basic things about our the program which we are which we are going to learn. So the very basic thing you will come across, that is the terminologies. The various terminologies you will come across. See, I am the student of organic chemistry, but still when we proceeded to our higher like from undergraduate to postgraduates, so we came across, it is a totally different curriculum that when we were in the 12th class and when we entered in our undergraduate first year course. So it is a very vast course. Basically, I'm not going to talk about the courses you are going to learn, but why this transitional course is essential for you. Why this transitional course? Not because the medical board or the medical we have the UGC programs. So likewise, the medical board also have some program design some programs for you. But why basically you need to you have to transit yourself, you have to transform yourself from one platform to another platform. Now, once again, I ask you, anybody can share why he or she has selected this course? कहीं ऐसा तो नहीं कि
भाई हमें कम मार्क्स मिले हैं, हमें MBBS में नहीं एडमिशन मिला, तो हमने BMS किया, तो कुछ बच्चे BMS नहीं मिलता है तो BHMS के लिए चले जाते. Is there like that? Yes. Yes. It is like that. That's why they don't want to share. But anyway, whatever you have adopted, whatever you have selected, so face it with in a good manner. All right. अरे ये क्या हो गया, ये अभी आ ही गए हैं तो क्या पढ़ेंगे, ऐसा सोच के अगर आप लोग इसको फेस करेंगे तो the things will be very very difficult for you. So keep it like a hobby, keep it like a passion for you, that yes, you have selected this program and now this is my passion. All right, because we know that the life is never stagnant. Life is never stagnant. So we have to, it is a continuous process, and we are all transitioning at one time or another. So it is a part of overall individualized education program of that is, or IEP, we can say that this is a individualized education program. All right, and that you have selected. So it defines the more from school life to adult life. So IEP is required and it is essential program for all the students. In the high schools, we have learned so many things. We have learned, many students, they have learned physics, chemistry, mathematics, biology, etc., etc. But this is a very special program, and this IEP is a very essential program for the, especially for the medical students. Why it is required? Because altogether your working style or your working pedagogy is entirely different, whatever nowadays. All right. So however your workplace, that is the workplace learning has, so in this transitional programs, what are the suggested pedagogy for the students, how they will face this issue, how they will face this this medical course, because a lot of things are involved. Like the first thing is you have to be very patient. Not patient means you have to be very patient. You have to learn how to listen to the other people. All right, being a doctor, or when you entered in this profession, so it means that you are going to be a doctor in a few years. So the first thing we have to inculcate in our mind that a good listener can be a good doctor, first thing. Okay, so whatever so be patient when, so try to inculcate this the qualities in yourself, so that it will be better for you also, and it will make you what we can say more and more successful in your future. So be a good listener, because you are going to listen a patient. शायद आपके लिए वो बहुत ही छोटी बात रहती होगी, but for the patient it is, for him it is a very important, because the patient has to tell the doctor that he has lot of problems, though the problems are very trifle, maybe very trifle as your point of view. But if you listen to the patient, so half of his problems maybe आधे से ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो उनकी निकल जाती है when you listen a patient. So the good listener, doctor should be a good listener, the first thing, and the be उनमें बहुत ज्यादा patience होना बहुत जरूरी है. So these are the two transformations you required in this course, in this transitional. Apart from, I am not talking about the medical terminologies, because I am a faculty of science stream.
All right, but being a layman, why this transitional course is required? Because you are going to represent the society, you are going to represent the youth in the medicos, in the medical section. So we need to implement so many things when we study. Yes, you have any? Okay, what I feel, you want to interact with me, so that's why. Anyway, so whenever there is a transitional course is required, the very first thing is to be suggested that, of course, this is the suggestions for the management, because student, they don't know how they will come across and how they will encounter the various problems. But this is the first suggestion to the management of this college. That is however, the workplace learning, which has been suggested when for the less stressful transition and improving the clinical learning. So whenever students will enter in this particular era, so the first thing for the management is, there should be a stressless condition they have to create, or a fearless condition they have to create for improving the clinical learning. And the workplace where the students are going to learn, it should be a fearless manner. It should be in a fearless condition, so that they can interact with their higher authorities. They can interact with their seniors or say the senior students. So this, though the participation in the physical, social and the cultural activities of the workplaces, students practice more on the procedural task, experience real patient encounters, and more patient care practices. So when we have a transitions, so just like I have shared that you should be a good listener. So how you should be good listener? So through by various these activities, like the various the participations in the physical, social and the cultural activities in the workplaces, and the students practice more on the procedural task. Now procedural task, in the sense that whatever procedures, whatever practicals they have, you will have in the future. So your active participation is very much necessary for there, and which experience a real patient encounters and more patient care practices. So actual working with the patients will definitely take you to the next level, so that you can easily deal with the problems of the patients. And of course the interaction is very much necessary, and of course once again I am reiterating the same point, that is the listening is a good tool to come across at the, and that quality will take you in such a level that the patient and the doctors, they are in a very much in a comfort zone. Then the another thing is, there is a gradual transition should occur in preparing students for this course. So this is a suggestion to the, of course they are very very good teachers, and your principal is very able, so under his able guidance, they will definitely prepare you this course in a gradual way. All right. So there is no worry and hurry also, so that but your what we can say, हमारी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए कि
हमें ये कोर्स करना है विद द पैशन। अगर आप इस कोर्स को अरे ये क्या, हमें अगर इसमें एडमिशन नहीं मिला है और अभी अभी करना है, कुछ बच्चे संस्कृत को इंग्लिश में लिखेंगे डेफिनेटली, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स ने संस्कृत लिया हुआ है in the 10th class. I don't know, but how many students they opted the Sanskrit or they passed with the Sanskrit subject? How many of you? Me, ma'am. Only one student? Me also. Yes, ma'am. Me also, ma'am. You also. Okay. So because you will come across so many Sanskrit words, or all the granthas, they are in the Sanskrit. सारे के सारे ग्रंथ जो है वो हमारे जो आयुर्वेदा है वो पूरा संस्कृत है, और संस्कृत में ही हमारी आयुष मंत्रालय ने जो भी हमें बताया हुआ है कि सारा जो पूरा ज्ञान का भंडार जो है वो पूरा संस्कृत में है। और काफी बच्चे जो संस्कृत वर्ड है वो जो आजकल हम लोग है ना, वो जो व्हाट्सएप का चैटिंग करते हैं वो मराठी भी हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, तो हम ये हिंदी में नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे HUMKYA लाइक दिस। हमें ये आदत हो गई है कि इस प्रकार से हम लोग एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन बच्चों आपको एक चीज सबसे पहले सीखनी है, देखो इसको पैशन बोलो या नीड ऑफ द डे बोलो, आपको पहले संस्कृत जो है उसको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। पूरे के पूरे जो ग्रंथ है उसे तो हमने ट्रांसलेट नहीं किया हुआ, हमारी जो लैंग्वेज है व्हाट्सएप लैंग्वेज में हमने उसे ट्रांसलेट नहीं किया हुआ है, आज भी वो ग्रंथ संस्कृत में है ना। शायद उसका मराठी ट्रांसलेशन किया होगा वागे सर इसे अच्छे से बताएंगे। वागे सर, मे आई नो दैट द संस्कृत का ट्रांसलेशन हुआ है मराठी में? Yes, madam. Most of the books had been translated to various languages, not only Marathi, but English, Hindi, all the languages and all the regional languages also. Now students have a liberty to learn in the language of their choice. Okay, so see, there is a very good news that all the granthas, they are translated into in the various languages. So now it's easy for you that you can learn it in English, you can learn it in the Hindi or Marathi, whatever language you preferred. All right. So, but the thing is to get the knowledge from the various granthas, even see, what I suggest that you just start learning Sanskrit. Just start learning. Yes. संस्कृत जैसे कोई एक पैशन होता है, हम लोग कभी म्यूजिक लर्न करना शुरू कर देते हैं, हम कोई लैंग्वेज लर्न करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही संस्कृत लैंग्वेज आपके लिए ऑक्सीजन जैसा काम करने वाली है। सो ट्राई टू लर्न दी, बिकॉज सम टर्मिनोलॉजी स्टिल दे आर इन द संस्कृत, ऑल राइट। एंड व्हेन यू रीड द संस्कृत, when you learn the Sanskrit and when you read the Sanskrit, you will see the change in yourself. All right. So the various terminologies, सारे के सारे books मेरे ख्याल से translate नहीं किए होंगे. There are still some books which are untouched. So ये ज्ञान का भंडार हमें जब इसकी चाबी हमारे पास है तो वो है संस्कृत लैंग्वेज। तो संस्कृत लैंग्वेज ये एक ऐसी चाबी है जिसको यूज करके हमें ये जो सारा भंडार है आयुर्वेद का, ये हमें आपको सीखने को मिलेगा। So the come to the transition courses. So I would like to suggest you that the gradual transition should occur in preparing the student for these courses. It is of course for your faculty members. And next thing is the time spent on the activities involving direct patients contact is positively related to the students, especially the perceptions of the quality of their learning environment. So if you give the good environment to the students, so their quality of learning, their perceptions, or the involvement with the patients, that is very important. So when you involve in the patients, that you have a very good when you have a patience,
to listen to them. So this quality or the direct contact with the patient is will make you a positive student. You can easily learn their problems. You can easily come to know their problems. So the quality and the better learning environment which will be provided by the management, which will be provided by this by the college, that makes you very, very comfortable. All right. So these are some couple of points which are necessary for the students, that how they can learn their courses in their respective colleges. Then the another point is you have to develop some clinical skills that creates the confidence and the motivations in the students, or some good skills. So you have to develop yourself in some clinical skills. जैसे हमें बताया गया है कि बीएमएस में सिर्फ नाड़ी देख के हम लोग सारी जैसे पूरा बॉडी का स्कैनिंग और स्क्रीनिंग होता है, तो पहले के जमाने में वैद्य लोग जो होते थे वो सिर्फ हमारी नाड़ी देखते थे और नाड़ी देख के हमें पहचान जाते थे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या क्लिनिकल इश्यू है ना। तो ऐसा कुछ आपने क्लिनिकल स्किल आपने अडॉप्ट करना है, सो दैट इट विल see, I always tell you, all the students, that whatever you have adopted the courses, make it your passion. आप पैशन के साथ अगर उसको काम करना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि एक एक पायदान आपके सामने खुला हो जाएगा. सो एक पायदान आपके लिए जो खुला होने वाला है, दैट इज योर क्लिनिकल स्किल्स. All those clinical skills will definitely make you very, very confident when you face your patients. All right. तो ऐसा आयुर्वेद का कोई क्लिनिकल स्किल जो है वो आप अपने आप में अडॉप्ट करें, और पेशेंट को जब आप चेक करोगे या पेशेंट के सामने जाओगे, सो दैट कॉन्फिडेंस विल डेफिनेटली टेक यू इन द नेक्स्ट लेवल. So again, I would like to suggest the management that while conducting these courses, there should be the interaction between the residential doctors or the intern doctors or the medicos, or because they have some influential roles in teaching the undergraduate medical students. So जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हो या कोई क्लास में बैठे हो, तो उसमें इंटर्न्स जो होते हैं आपके, या आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने इंटर्न्स के साथ जरूर या अपने जो सीनियर्स होते हैं उनके साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स जरूर डिस्कस करें, क्योंकि दे प्लेड अ वाइटल रोल इन टीचिंग द अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स. And these are some points I would like to share with you, because this is a transitional program, and because the technical knowledge will definitely help you in various aspects. Dr. Wage and the other dignitaries, they will in the very short period I have seen there are various programs which are been there that know your course. I have seen. So they will definitely share all the technical terms and all the terminologies which are involved in the Ayurveda. But last and not the least, I hope that this transitional program, it has really a great importance, and the institution should ensure that the residents or the interns should involved for this program, and they will supervise the students, that is the student learning activities and the clinical teaching. So all the best, and I wish you all the best for your future endeavors, and you will come across all the difficulties. Of course, you just entered in this courses,
मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन there are so many good things are going to happen with you, and all the best for your future. And thank you so much, Jupiter Ayurved College, for inviting me for this program, and thank you so much. Thank you very much, madam, for your intelligent and interactive address. Actually, we wanted to host you on the day of Samavartan Sanskar, when the students, they end their studies and go back to their business. But it's we are happy to host you on the day of Vedaramba Sanskar. So when the student takes entry into the course, in your speech you made some 2-3 points. That's one among that is the patient hearing, listening patiently to the complaints of the patient. So this is very important point, as is told in our science, that the doctor, how the doctor should approach the patient in the consultancy. They have used the terminology sumanasa, kalyan abhivyavaharena, akokena, purva abhivashi. That means purva abhivashi. That means when the patient is not talking to you, just as where students were keeping mum and they were not talking. And so when you have to bring out of them some complaints, sometimes patient doesn't tell you what actually they face. So that's why Acharya says the doctor should be purva abhivashi. He should make the patient to put out his complaints. That is meaning of purva abhivashi. And sumanasa, with a good mind, with a good intention, and kalyan abhivyavaharena, with a good intention that I will cure this patient. There is a very good approach to the patient in Ayurveda that is mentioned. It's unfortunate that for a long time nobody paid attention to this beautiful science, and most of the time I feel that these our ideas are stolen from us, and what are reflected in modern books, they have the ancestral roots in our books. Not only madam has also made that to acquire the skills for that purpose, how the doctor should be, that has been mentioned in our science. Shrute Paryabadatmam. Shrute Paryabadatmam means he should have learned the science theoretically as well as practically very well. And he should be able to implement that in his clinical practice. And Shaucham Daksham. Daksham is Daksha. Daksha actually he should be very alert. Whenever any medical emergency arises, he should be very alert. So these are some qualities of the physicians they have mentioned. Another point you raised, madam, is of the Sanskrit language, and no doubt the ancient wisdom of treasure of wisdom is in the Sanskrit language, and for that purpose, NCISM have kept one subject of Sanskrit in the curriculum, so that students can learn actually the original verses from the science. For that purpose, in the transitional program also, we are going to have Sanskrit expert who will guide the students on speaking Sanskrit. Sanskrit made easy program will be carried out in that also. So thank you very much, madam. And I think the last time we wanted to felicitate you, and that has been that trophy and award has been left to us. And hopefully in some other program we will call you physically. That time we will be able to felicitate you again. And thank you very much for sparing time for us. We will be, as discussed, we are interested in making memorandum of understanding with your institute. You are pioneer in nutraceuticals and many organic chemistry related things. I'm very much delighted with your scientific work, and you are fellow of Royal Society of London, and you have done so much enormous contribution to the science. I'm really very impressed with you, madam, and hopefully our institute will benefit from your rich experience and your institute and the MOU which we are going to ink in days to come. Thank you very much, madam. Thank you very much. So I take your permission that I have to leave for my work. So I take your kind permission, and should I leave? Yes, madam. You can. Okay. Thank you so much, sir. So, Dr. Shrikant,
Yes, yes. Thank you. We will move forward with our next scheduled program, that is the introduction of the students, newly admitted students, then the opinion of the senior students. May I invite these students one by one to give their introduction, their names, the college from which they have passed, their HSC, and their hobbies. And whatever, if they want to express why they have taken admission to this particular course, if they want to express, they may. So I welcome students one by one to come forward, open their videos and introduce themselves. Students, make your videos on. Make your videos on. And start introducing yourself. So go on, gentlemen. Hello, sir. Go on. Sir, myself, Tekchand Murlidhar Bhandarkar. I am from Sakoli, Maharashtra, and I am passed out HSC from Nanaji Joshi Junior College, Shahpur. Thank you, sir. Why you are been to this course? सर मुझे आयुर्वेदा का थोड़ा पसंद है, मुझे आयुर्वेदा, और मेरे फैमिली में भी सारे जो है ना वो सारे के सारे एमबीबीएस में ही है, आयुर्वेदा में कोई है नहीं, इसलिए मेरे को आयुर्वेदा में थोड़ा इंटरेस्ट है. Okay, next. Good morning, sir. Very good morning. Good morning. Myself, Shahana Begum Syed Zamir. I am from Parbhani, Maharashtra, and I have completed my HSC from Dr. Zakir Hussain Junior College, Parbhani. And my hobbies is reading ancient historical books and novels and going to adventure. And I choose BMS course because I really want to practice ancient history, historical medicines, and cure the patient by Ayurvedic therapies. Thank you, sir. Okay, welcome. Next, please. Hello everyone, I am Vaibhavi Vishwanath Delmade from Nanded, Maharashtra. I have passed my HSC from Yeshwant College, Nanded, and I take BMS course because I live in a village. I want to know about the plants we say around, how they useful for us, and how can we treat people by using them. Thank you, sir. Could you please open your video? Could you please open your video? What's your name? Just only those who open videos who want to give their introduction. Rest all may close. Good morning, sir. Very good morning. Myself, Gaurav Daya from Jodhpur, Rajasthan. I completed my HSC from James Convent Senior Secondary School, and I joined this BMS course for know about
Ayurveda with like Prachin therapy. Thank you, sir. Okay, fine. Next. Good morning, sir. Very good morning. Good Go morning, on. sir. Sir, myself Vidhi Verma, and I am from Nagpur, Maharashtra. And I passed my HSC from St. Paul Junior College, Hudkeshwar Road, Nagpur. And I wanted to learn BAMS to treat people in Ayurvedic manner and with no side effects, so that people will be cured, and without any side effects they are being healthy for their good nature and all, so that they are not they will not be facing the issues which the allopathic medicines are giving patients. Thank you. Welcome. Next. Kishore Pardi, either you give your introduction or close your video. Sir, my name is. Yes, go on. Sir, myself Kajan Yadav from Lucknow. I have completed my 12th and 10th from SPD Academy, and I am here. Thank you. Sir, my name is Kishore Pardi and I am from Sakoli. I completed my HSC exam from Adarsh Sanskar Vidyalaya Nagpur, and I am taking choose this course for know about Ayurveda. Thank you, sir. Good morning, sir. My name is Arfat Ali. I am from Gorakhpur, from Uttar Pradesh. I have completed my SC from Ratna Memorial Public School in Gorakhpur. Thank you. Good morning, sir. My name is Pranita Madhurao Baswante. I am from Nanded, Maharashtra. I have completed my HSC in Honorable Baban Raoji Shinde in Solapur. I want to know the natural methods in Ayurveda, and also I want to know the treatments and all course. And my passion, my hobby is drawing and reading. Okay, fine. Hello, sir. My name is Syed Mufez. I am from Amravati. I have completed my HSC from Friends English Junior College of Science, and my hobbies are reading, biking, and traveling. Okay, fine. Good morning, sir. Good morning, sir. Syed Ali, you close your, either give introduction or close your video. Syed Adil. Good morning, sir. Yeah, good morning. Good morning. Sir, myself, I am Nitin Vikram Jadhav from Ahmednagar, Maharashtra. I passed 12th in Abasai Pakre Junior College, Shevgaon, and my hobby is reading, writing, and I know about more Ayurveda. That's why I am choose this course. Thank you, sir. Good morning, sir. My name is Syed Adil. I am from Bir district, Parli Vajna. And I completed my 12th from Sarosh Junior College, Aurangabad. Thank you, sir. Okay. Next, please. Good morning, sir. Good morning, sir. I'm Sakshi Chauhan. I'm from Gondia, Maharashtra, and I passed my 12th from Adivasi Vikas High School. I choose BMS course because I'm interested in ancient history, and I want to learn Ayurvedic treatment. Thank you. Okay, fine. Next. Good morning, sir. Sir, am I audible? Yes, go on, please. Good morning, sir. Myself, Pooja Patil. I am from Jalgaon. I completed my HSC from Swami Vivekanand Junior College, Jalgaon. Thank you, sir. Next.
Good morning, sir. Gunjan Mishra. I'm from Gondia, Maharashtra. I completed my 12th from Progressive Science Junior College, Gondia, and I've chosen BMS course because, as per my scenario, choosing this course means choosing a lifestyle, and as well as I want to treat and heal my patients who I my hobbies are reading, writing, and cooking. Thank you. Next. Good morning, sir. Am I audible? Yes, you are audible. Sir, my name is Anurag Deshmukh. I am from Buldana, and my pass out my 12th from Latur. And so thank you, sir. Hello, sir. My name is Nikita Mane. I'm from Jalna, Maharashtra. I completed my HSC from Yoganand Mahavidyalaya, Portur, and I want to become a BMS doctor just because to learn about herbal medication and its treatment. Thank you. Next, please. Good morning, sir. Myself, Rituja Rathare. I am from Hingoli, Maharashtra. I have completed my 12th from Hutatma Baherji Smarak Mahavidyalaya, Wasmat. Thank you. Okay, next. Good morning, sir. Myself, Ganesh. I am from Jalna, Maharashtra. I passed HSC, Moreshwar High School, Rajput. Thank you, sir. Okay, next. Next, please. Yes, go on. Good morning, sir. My name is Mohit Bhandarkar. I'm from Gondia, and I passed my HSC from Shri Nirala Junior College, Nagpur. Thank you. Yes, next. Hello, sir. Hello, sir. You are audible. Go on. Myself, Paras Rameshra Boyer. I completed my HSC exam from Major Himan Jalate College, Nagpur. Thank you, sir. Okay, next. Who is next? Good morning, sir. My name is Avanti Zoshi, and I completed HSC from Sancheti Junior College. I am from Nagpur. Good morning, sir. My name is Smita Khade. I am from Varda. I complete my HSC from Gandhiram Junior College, Varda. And I choose the BMS course to treat my patient with Ayurvedic method. Thank you, sir. Are there any more? Everyone finished? Good morning, sir. Good morning. Go on. My name is Bhushan Thakre. I am from Thane, Maharashtra. I completed my HSC from BNN College, Guwahati. Next. Hello, sir. I'm Dipti Patil from Nandurbar. I completed my HSC study from PK Anna Patil Junior College, Nandurbar. Thank you. Don't overlap. Close your video. Hello. Hello. Paras, go. Hello. Close your video. Bhushan Thakre, close your. Yes, go on, please. Good morning, sir. My name is Vanshika Arinkele. I'm from Nagpur. I passed out my 12th standard studies from St. Paul Junior College, Hudkeshwar, Nagpur. Basically, I've chosen a BMS course. As you see, the generation is moving towards Ayurvedic science, and also we're starting believing in Ayurvedic
So I choose BMS course to learn something new. Thank you, sir. Okay, fine. Good morning, sir. I am Simra Fatima, and I'm from. I passed out my HSC from Shah Babu Junior College, Akola. Actually, I was allotted MBBS course, but because of my health condition, I got hospitalized at the time of reporting. But still, I'm happy to choose BMS and to serve people with it. Thank you, sir. Welcome. Bhushan Thakre, close your video. Syed Mufaiz, close your video. Next, please. Next, please. Good morning, sir. Myself, Poonam Shetwad. I am from Aurangabad. I completed my HSC from JNV Aurangabad. Thank you. You make your video on. Just start again. Myself, Poonam Shetwad. I belong to the Aurangabad. I am completing my HSC from JNV Aurangabad. Okay. Thank you, sir. My next. Next. Have you all finished? Have you all finished? Yes, Is sir. anyone left? Yes, sir. If anyone left, then go on, please. Go on introducing yourself. I can see one Mr. Sunil Suradkar. Go on. Make yourself unmute. Unmute yourself. Is there anyone left? All have finished? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Anyone Yes. left? All have finished? All 40? So I will request now the seniors to give their opinion about the college and the teaching and training here. So I can see some seniors joined. Can see Achal. Achal, could you please come forward? Achal Thakur. Snigdha Gupta. Snigdha, are you there? Yes, sir. Good morning, sir. Make your video on. Hello. Make your video on 10 and tell your experiences here to the juniors who are newly admitted to the college. Yes, sure. Hello. Am I audible, sir? Yes, you are audible. Good morning, everyone. Good morning, respected lecturers, respected seniors, and all the juniors. I'm Snigdha Gupta from third year JAMC. And about the college,
all our respected lecturers are very much helpful in everything. If you need help with your basic studies, your projects, your assignments, anything, they are very much helpful. And you need opinion on something, that always be ready to help you. So yeah, you can always use for extra references, you can always use the college library. So yeah, I welcome all of you, and please look forward to studying more about Ayurveda. Thank you. Thank you, Snigdha. Vikrant Tripathi is there. Vikrant, Yes, sir. Hello. come forward. Yes, sir. Yes, sir. Yes, please go on. सुप्रभात प्रधानाचार्य महोदय, सुप्रभात आचार्य, सुप्रभात मित्रों। सबसे पहले मैं विक्रांत त्रिपाठी अपने पूरे बैच की तरफ से और अपने पूरे कॉलेज की तरफ से आप सभी जूनियर्स का स्वागत करता हूं। जैसे पता होगा कि अपने कॉलेज का नाम जुपिटर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का नाम तरिणी आयुर्वेद रुग्णालय है। अपने कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2001 है, यानी कि 2001, यानी 20 से 21 सालों से मेडिकल फील्ड का अनुभव लिए हुए CCIM की रैंकिंग में शीर्ष पर है। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सर, रेस्पेक्टेड डॉक्टर सुभाष वाघे सर, कॉलेज का टीचिंग स्टाफ, सभी सर एंड स्टाफ, सभी लोग बहुत ही सपोर्टिव है। अपने कॉलेज में हर सब्जेक्ट की रेगुलर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास होती है। मैं आप सभी जूनियर्स का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले ईयर से भी और हर साल हम लोग कार्यक्रम को भी करते हैं कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ। मैं आशा करता हूं कि इस साल भी आप सब लोग साथ जुड़ करके सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, जैसे कि छत्रपति शिवाजी जन्मोत्सव रहता है 26 जनवरी 15 अगस्त का। और आइए मिलकर के हौसले के साथ पढ़िए, अपने जीवन में एक नई ऊंचाइयों को छुइए। साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद, जय हिंद। Very nice, Vikram. Vikrant, I can see Muhammad Alam also is there. Alam, could you please come forward and say a few words to the students, newly admitted students? Suprabhatam, sir. Suprabhatam. Good morning, teachers and my dear seniors. And firstly, I would like to thank you for giving me this opportunity, and it's my pleasure to introduce myself. My name is Mumtaz Alam. I am basically from Kanpur, Uttar Pradesh, currently residing in Nagpur. Now, I would like to introduce about my college. Jupiter Ayurved Medical College and Tarini Ayurved Hospital, located at Sankarpur, Nagpur. It is a self-financing institute affiliated to NUHS Nasik. The institute provides us all the facilities, the inspiring Ayurved physician. The academic wings is staffed by dedicating and profiting faculties. Apart this prescribed curriculum of Ayurveda, this college has visiting practitioners of modern medicine to share their knowledge through guest lecturers. There are regular clinical meetings held by the principal sir and all respected teachers. Along with clinical meeting, our teachers and seniors make health camps. Our teachers give knowledge of Ayurveda as well as modern medicine. Thank you. Thank you, Alam. I think Anchal is also there. Anchal, could you please come forward? Or Neha Shah? Yes, she is there. Just go on, please. Share your experiences. Share your opinion. Unmute yourself first. Unmute yourself. You are not audible. Unmute yourself first. Suprabhata Acharya. Suprabhatam. First of all, I like to introduce myself. Mama Nama Achal Asti. Aham Jupiter Ayurved Mahavidyalaya Chhatra Asti. I'll continue with English. Uttamam. I'm second year Ayurvedic student. My experience was so good. College staff is so supporting, and even our respected Dr. Subhash Vagar sir is also so supporting. He always support us in studies and in all the activities, like in sports, in competitions that is conducted by all colleges, all Ayurvedic colleges or other medical colleges of other fields.
And our subject teacher is also good. They help us in study. They are 24/7 available for us for clearing our doubts. And overall, my experience was so nice. Thank you, sir. Thank you, Achal. Neha Sharma is there. Neha's. I think from interns, I think I can see Kritika and Firdaus is there. Kritika, could you please come forward and share your experience? Sir, am I audible? Yes, you are audible. Go on. Good morning, everyone. Myself, Kritika Rao. I'm intern at Jupiter Medical College in Ayurvedic Hospital, and I'm student of Jupiter Ayurvedic College of 2016 batch. The college is very, and the staff is supportive, and most of the students, I have seen in the introduction, most of the students are interested in Ayurveda. So I hope your interest gets stick and you stick to Ayurvedic practice, no matter how many hurdles you get in between your college life. So stick to your Ayurveda interest, and all the very best to all. Any more seniors are there who want to express their opinion about the institution? Please come forward voluntarily if you are there. Firdaus Sheikh, I can see Firdaus. Firdaus, could you please come forward and share your experiences here? Yes, sir. Good morning, everyone. Myself, Firdaus Sheikh, intern at Tarini Ayurved Rugnalaya, student of 2016 batch, and welcome to Jupiter Ayurved Medical College. पहली बात तो आप जैसे आपने बताया कि सबको आयुर्वेद में इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से तो अपना कॉलेज पहला ऐसा कॉलेज है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। यहाँ के सारे स्टाफ भी अच्छे हैं, अपने प्रिंसिपल सर बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। तो ये अपने ऊपर है कि अपन कॉलेज से कितना लेते हैं, टीचर से कितना लेते हैं। जैसे आपने बताया कि आपको आयुर्वेद में सबका आयुर्वेद में इंटरेस्ट है, तो आप उसी चीज पे आप चिपके रहिए कि अपने को आयुर्वेद ही करना है, जिसका मॉडर्न आगे जाके मॉडर्न व्यू रहेगा, तो बिल्कुल अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उधर जा सकते हैं। लेकिन जिसने बताया आयुर्वेद का, तो वो उस हिसाब से आगे बढ़िए। और यहाँ के टीचर लोग लेक्चरर्स वगैरह में बहुत सपोर्ट, लेक्चर वगैरह लेने में बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये अपने ऊपर है कि अपन टीचर को कितना ज्यादा यूज लेते हैं। और यहाँ पे कैंप, क्लिनिकल मीटिंग, इन सब में भी पार्टिसिपेट करना है। और What are your experiences with clinical meetings? हाँ, क्लिनिकल मीटिंग्स में जो डिसीज होती है या जो टॉपिक्स दिए जाते हैं, उस पे अपने को प्रिपेयर करके टीचर्स की हेल्प से प्रेजेंट करना होता है। इससे अपना नॉलेज भी बढ़ता है और साथ में कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। और जो सर की बुक है वो सही में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, तो प्लीज उसको यूज करें। Okay, anyone more are there who wants to express themselves? Sir, I would like to say something. Yes. Yes. अब तक सारे सीनियर स्टूडेंट्स ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, कॉलेज के बारे में हो, फैकल्टीज के बारे में हो, या वेरियस प्रोग्राम्स के बारे में हो। ऐसे कोई सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आंचल हो, आलम हो या विक्रांत हो, कि फर्स्ट ईयर जब उन्होंने ज्वाइन किया, जब उनका ट्रांजिशनल करिकुलम प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जस्ट द फर्स्ट डे, इस प्रकार आज सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट डे अपना ट्रांजिशनल करिकुलम प्रोग्राम ज्वाइन किए हैं, उस दिन उनकी क्या स्थिति थी और आज उनमें क्या बदलाव हुए, उनके मन में क्या स्थिति थी कि अभी साइंस में आए,
मैक्सिमम लोगों का ये थे कि क्या हम कर पाएंगे, क्या हम संस्कृत को आगे बढ़ा पाएंगे, अपने जो भी साइंस है उसको, या हम इस स्ट्रीम के साथ आगे बढ़ पाएंगे। जो भी सारे मन में विचार थे, जो स्टूडेंट्स आज सेकेंड ईयर में गए हैं, उन्होंने इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया, उनकी जो भी ये थी सिचुएशन थी वो एक्सप्रेस, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कोई एक स्टूडेंट जो ट्रांजिशन हुआ विद इन 1 ईयर वो एक्सप्रेस करे। Very nice point made, Dr. Shrikant sir. Very nice, very nice. Please come forward, the students. सर एक्चुअली जब हम लोगों ने ट्रांजिशनल करिकुलम ज्वाइन किया तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग को इसमें हेल्प हुई कि लाइक संस्कृत हम लोग को नहीं जमती थी, हमको जमने लगी। और बाद में जो बेसिक था आयुर्वेद का, जिससे हम लोग आज तक भी स्टार्टिंग से हम लोगों ने सिर्फ मॉडर्न साइंस पढ़ा था, आयुर्वेदिक साइंस नहीं पता था, वात पित्त कफ क्या है कुछ नहीं पता था। बट ये 15 डेज का जो प्रोग्राम था उसमें ओवरऑल बेसिक पूरा क्लियर हुआ था, जो हम लोग को फर्स्ट ईयर में बहुत हेल्पफुल रहा। और जो हम लोग की मतलब वे ऑफ थिंकिंग ये फील्ड के बारे में जो बदली है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये इधर एडमिशन लिया ऐसा सोचा था कि मिक्सोपैथी करेंगे, बट जैसे हम लोग को ये प्रोग्राम पता चला कि बहुत सारे मतलब रास्ते हम लोग को जाने के लिए आयुर्वेद में हम रिसर्च पेपर्स ये कर सकते हैं, इसमें रिसर्च कर सकते हैं, कोई मेडिसिन इन्वेंट कर सकते हैं, बहुत कुछ है हम लोग। और ऐसा है कि अभी हम लोग को मिक्सोपैथी नहीं करना है, अब फर्स्ट आयुर्वेद करना है। पहले था कि मॉडर्न मतलब जो एलोपैथी प्रैक्टिस है वो करना है, बट अब पॉइंट ऑफ व्यू मतलब अलग हो चुका है कि आयुर्वेद के थ्रू आयुर्वेद को आगे लेके जाना है, इसमें कुछ करना है। हमारी पैथी है, हमारी पैथी छोड़ के हम लोग को मॉडर्न के तरफ नहीं जाना। ये हम लोग का एक्सपीरियंस था। थैंक यू सर। विक्रांत। यस सर। सर जब मैंने सबसे पहले कॉलेज ज्वाइन किया बीएमएस के लिए, फिर ट्रांजिशनल करिकुलम हुआ, तो फर्स्ट डे पे तो मुझे लग रहा था कि बीएमएस मैं नहीं करना चाहता हूँ या मुझे नहीं करना चाहिए। सर का लेक्चर हुआ आयुर्वेदा के लिए, तो जब बताया गया तो फिर मैंने और थोड़ी सी रिसर्च की इस बारे में। तो मुझे पहले से पता भी था कि जो सर्जन है, सबसे पहले सर्जन है वो आयुर्वेद से ही है, हमारे सुश्रुताचार्य जी है। और फिर धीरे धीरे फिर और मैंने इस आयुर्वेद में नॉलेज गेन करना शुरू किया, तो इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया। मॉडर्न की थोड़ी सी जब 11th-12th मैंने पढ़ा, और फिर तो उसमें मॉडर्न के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मुझे पहले से थी, बट आयुर्वेद के बारे में मुझे पता नहीं था कुछ स्टार्टिंग से भी। पर जैसे मैं गांव में हूँ या शहर में भी रहता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नाड़ी परीक्षण करके बता देते थे कि अब ये 4 महीने जिंदा रह पाएंगे या इनके पास 4 घंटे का समय बचा है। तो ये सारी चीजें जो सिर्फ नाड़ी परीक्षण से ही बता देते थे लोग, तो ये जानने के लिए मैं स्टार्टिंग से भी उत्सुक था कि ऐसा कैसे कर सकते हैं ये, इनको ऐसा इतना सटीक कैसे पता रहता है। जैसे मैं एक सच किस्सा ही बताता हूँ आपको, मेरे बाबा के साथ भी ऐसे हुआ था। तो वो जो आए थे वैद्य जी जिनको बोलते थे हम, उन्होंने बता दिया था कि सुबह तक का टाइम है इनके पास में, और ऐसा ही हुआ। इन सारी चीज़ों के लिए फिर मैं आयुर्वेद की तरफ भी बढ़ा, और ट्रेडिशनल करिकुलम जो 15 दिन का हुआ उसमें पूरा एकदम माइंडसेट जो था मेरा मॉडर्न को लेकर के, तो वो एकदम से चेंज हो गया। आयुर्वेद की तरफ मेरा रुझान बढ़ने लगा, और धीरे धीरे मैं इस पे काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, किताबें जो सर ने दी हैं उनको भी पढ़ रहा हूँ। और सोचता हूँ कि जब सबसे पहले मैं अपनी पैथी को अपना मानूंगा कि नहीं ये मेरी पैथी है, तभी मैं उस पर ईमानदारी से काम कर पाऊंगा और उसको आगे ले जाऊंगा। मैं सिर्फ यही सोचकर अब मैं आयुर्वेद पढ़ रहा हूँ कि आयुर्वेद में मुझे कुछ करना है, कुछ अपना नाम करना है, और आयुर्वेद को आगे लेकर के जाना है, जिससे पूरे भारत में और पूरे विश्व में हम बता पाए कि नहीं, हमारी यही संस्कृति है जो हम शुरुआत से लेकर के चले आए हैं। कुछ लोगों की वजह से हमने इसको खोया, लेकिन फिर हम इसको जिंदा रखेंगे। धन्यवाद सर। वेरी नाइस विक्रांत, वेरी नाइस। आलम। सर फर्स्टली तो जब मैंने पहले दिन ये प्रोग्राम ज्वाइन किया था तो मुझे संस्कृत और अदर्स जैसे कफ वात पित्त इनका कोई नॉलेज नहीं, लेकिन जैसे 15 डेज का ट्रांजिशनल करिकुलम मैंने ज्वाइन किया, वहाँ मेरे बेसिक्स क्लियर हुए और मुझे पता चला कि ओवरऑल अपने सब्जेक्ट या अपने ईयर्स में टोटल कितनी चीज। हमारे सर ने पहले, आप प्रिंसिपल सर ने ऋतुचर्या, दिनचर्या, इन सारी चीजें कंसेप्ट पहले डे 1 से क्लियर करा। तो फिर यही होता है कि जब तक अपन को बेसिक्स नहीं पता रहते तब तक हर एक चीज बहुत बहुत टफ लगती है, लेकिन जब जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप अपने टीचर्स या अपने सीनियर्स जब क्लियर कराते रहते हैं तो वो चीज इजिली हो जाती है। बात है आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन, तो अपने यहाँ दोनों चीजें सिखाई जाती है। प्रिंसिपल सर क्लिनिकल मीटिंग के थ्रू
हम लोगों को ईसीजी और कई सारी ऐसी डिसीजेस जिनसे हम लोग कभी पहले नहीं जानते, वो सब क्लियर कराते हैं। तो क्या होता है कि अपना लिंक बन जाता है। और मॉडर्न या आयुर्वेदा के थ्रू भी सर एक से एक स्टेप बाय स्टेप कैसे किसी पेशेंट्स को देखना या किसी पेशेंट से कैसे इंटरेक्ट करना, वो सारी चीजें सर क्लियर कराते हैं। और मॉडर्न मेडिसिन भी स्टेप बाय स्टेप सिखाते रहते हैं सर। सर की बुक्स हमने पढ़ी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, सारी एक डिसीजेस विद सिम्टम्स एंड उसका क्योर कैसे अपन ट्रीट कर सकते हैं, क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो हर एक चीज सर ने आयुर्वेदा एज वेल एज मॉडर्न मेडिसिन दोनों को कंपैरेटिव लेके चले हैं। तो इसके थ्रू हमने जब ट्रांजिशनल ज्वाइन किया था तो हमें लग रहा था कि नहीं, मुझे मॉडर्न ही करना है, मॉडर्न बेस्ट रहता। लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप हमने सीखी चीजें, पैरेलल उनकी स्टडी की, तो मुझे समझ आया कि नहीं नहीं, अपन दोनों ही सही है। लेकिन अब आयुर्वेदा अपनी एंशिएंट बुक्स हैं, तो एंशिएंट पे हमें ज्यादा भरोसा है और हम उसके थ्रू ही बहुत अच्छा नाम कर सकते हैं। तो अब मैं अपने सभी जूनियर से ये कहता हूँ कि आप कॉम्परेटिव पढ़िए, लेकिन अपनी पैथी को मत भूलिए। जहाँ से अपना सीखना हो रहा है, जिसमें हम अपने 5 साल लगाएंगे, उसमें हम काफी अच्छा कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट टू मॉडर्न में। थैंक यू सर। आप अपना इंग्लिश वाला एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। शुरुआत में आपको क्या क्या दिक्कत रही, कोई हमने छूट नहीं दी? यस सर, शुरुआत में तो हम लोग मतलब इंग्लिश और हिंदी करते रहे, मतलब कैसे समझना है कैसे करना है। लेकिन फिर सर लोग बताते रहे कि मतलब इंग्लिश के थ्रू ये इधर है, और हम लोग मैक्सिमम इंग्लिश में ही सब कुछ सीखे। और हमारे टीचर्स और जितने फैकल्टी मेंबर्स थे, वो सबने इंग्लिश पे ही फोकस किया और अच्छे से सिखाया हर चीज। हम लोगों ने यहाँ तक कि मॉडर्न के साथ साथ सनातन धर्म का भी अच्छा यूज किया। जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग बोल के सुप्रभातम और कई ऐसी चीजें जैसे शुभ मध्याह्न, शुभ संध्या, तो ये हम लोग कॉम्परेटिव सीखे। जो कुछ भी सीखना था हमें, जैसे जो एक कॉलेज मॉडर्न या आयुर्वेद सिखाता है, हम उससे थोड़ा लीक से हट के रहे। हमने दोनों चीजें इक्वल वे में समझी और सीखी। Very nice, Alam. Very nice point made out by you. Actually, when there were some few boys who were from Urdu background, and when they admitted to the college, they approached me that I should give them a liberty to learn the science in Hindi. But see, this college is of English medium, and I didn't accept their plea, and I made them to learn in English only and write in English only. And they are so much expert in writing and talking English. They have commanded over it. I'm very happy to see the transformation they have made with their efforts. Secondly, the things, though we are English medium college, but we follow here the Indian culture, the great Indian culture. For good morning, we say Suprabhatam Acharya. For good afternoon, sir, we call it as Shubhamadhyana Acharya. For good evening, Shubhasandhya Acharya. And good day, sir, Shubhadinaha Acharya. This is the transformation. These all boys they made here, and they obediently they followed our directives, whatever we made them from time to time. And we have conducted so many programs. We not only believe in only teaching, but extracurricular activities like sports, our national festivals. Apart from national festivals, we celebrate Ayurveda Day, we celebrate Yoga Day, we celebrate Sanskrit Day, and we celebrate Shiv Jayanti every year. Apart from this, we conduct Samavardhan Sanskara, we conduct Vedaramba Sanskara, Vedaramba and Upanayana together. So many things we do here that is apart from extracurricular. So if some more wants to express themselves, I welcome them here. We are having some few more time before we finish for a lunch break. But do we have time, Shrikant sir? We can start the next session also, sir. That is introduction of campus. When that is scheduled actually? 12:30, sir. 12:30. We have some little time to go.
So I will request some more if they want to express themselves, they can please come forward. And if our senior faculty, Dr. Raviraj Pardeshi is there, I will request him to say a few words. Raviraj sir. Yes, sir. Yes. Yes, please, sir. Please go on. Please bless these boys, newly admitted students, with your words. Yes, sir, definitely. Just give me a moment. So, hello, students. This is Dr. Raviraj Pardeshi. I am professor in physiology here. The subject will henceforth be known as a Kriya Sharir, and this is Ayurvedic terminology which you will be made familiar with. So, the meaning of physiology is a Kriya. Kriya stands for something which is dynamic. So, the physiological mechanism we will be studying under the heading of a Kriya Sharir. And I assure you that we will be giving you the knowledge of both Ayurveda as well as modern physiology at par with the students of MBBS, what they study in their first year of MBBS. We will make sure that most of the syllabus which is there in MBBS is also covered for you all. So it is up to you how to study and to what extent you can extract from us. So we will be giving you that much. So hence I encourage everybody to study hard. Don't get depressed because you have not got admission to MBBS. So it was yesterday, but today you are a student of Ayurveda and you should focus learning Ayurveda. And I assure you that you all have a very bright future. And under the able leadership of our principal sir, who is a hardcore academician, who is always enthusiastic in imparting a novel teaching methods, who insists that all students must learn. So I guess that with this confidence and under his able leadership, we all will be able to take you through the journey which will bring success at end. With this, I welcome you all. And thank you, Vagesh sir and Shrikant sir, for giving me opportunity to speak. Thanks a lot. Thank you, sir. Boys, Dr. Pardeshi sir is a gem in our institute. Under his guidance, you will learn the modern physiology as well as Ayurvedic physiology. He is well versed in both the sciences. He possesses the requisite expertise in that subjects. Not only that, in research methodology also, he is the expert. And hopefully he will make the subject very interesting, and you will find learning a pleasurable experience under his guidance. So I'm looking forward for everyone's cooperation in this regard. And if some more faculties are there, if they want to express voluntarily, they may please. So we can directly start the next session regarding subjects and departments. Okay. Which will cover both the things. So fine. Let's start from first year faculty only. Shri Rachana. If Dange madam is there. Yes, sir. Good morning, everyone. Please introduce your subject. Suprabhatam Acharya. Suprabhatam. Myself, Dr. Mrunal Dange. I am a associate professor in Rachna Sharir department. I am here in the JAMC college from 2016 November. I will teach you Rachna Sharir. Rachna Sharir means anatomy. Rachna means structure, and Sharir means human body. So structure of human body, we have to learn Rachna Sharir. And along with this, all bones, joints, organ, embryology, histology related, all structural anatomy we have to study in this. And main focus is on dissection. Dissection, that is cadaveric dissection. Cadaver means dead body. So we have to main focus here in first year is dissection of dead body. While doing dissection, we practically learn the structures of anatomical structures. We will practically see the
structure of the organs and along with muscles through muscle, nerves and etc. We will learn in this. This is the modern related part, but Ayurveda related part is also here. That is Garbha Sharir, means how गर्भ की उत्पत्ति कैसे होती है. मॉडर्न में इसको एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, जो मदर के वूम में बेबी का ग्रोथ कैसे होता है वो उसमें हम लोग पढ़ते हैं. और एक टॉपिक हमारे इसमें फेमस है जो बहुत प्रैक्टिकल रिलेटेड टॉपिक है, जो है मर्म शारीर, वो हम लोग सिलेबस में पढ़ेंगे. अलॉन्ग विद दिस हम लोग जो रचना शारीर है उसकी हिस्ट्री मतलब पुरातन जमाने में हमारे इसमें कैसे ये रचना शारीर पढ़ा जाता था, उसके लिए पुराने आचार्यों ने मृत संशोधन विधि किया था. मृत संशोधन विधि यानी जो मृत शारीर है उसको लेके उसके ऊपर संशोधन करके उसके ऊपर डिसेक्शन करके उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे गेन किया था उसके बारे में हमारे इसमें बताया गया है. So I welcome all you in the JAMC and we will learn all these topics in the department. Good day. Thank you so much. Thank you, madam. Next, physiology. Yes. Hello. Good afternoon. Am I audible to all? Yes, you are audible. Yes. Hello. Good afternoon, dear students, and I welcome you all, Jupiter family. Myself, Dr. Priya Mishram, and I am a lecturer of Kriya Sharir department. And you already know Dr. Raviraj Pardesi sir. He is HOD of our department. The subject which I am going to deal is Kriya Sharir, and this comes in first year syllabus. Kriya Sharir Vigyan. The subject comprises of the three words Kriya Sharir Vigyan. So let us see what is Kriya. Kriya means, in layman's language, you can say Kriya is the movements of any means we can say its word itself denotes movements, and but in this subject we are going to deal with the normal functioning, and Sharir is nothing but Sharir, or we can say body, and Vigyan. Vigyan is made up of two words. If we separate it, V and Gyan. V means it is a specific, yeah, Vishisht, and Gyan means knowledge. So here we are going to deal with the normal physiology of human body. So in this, Vata, Pitta, Kapha are the basic components of body in Kriya Sharir. So all the rest of these years, you are going to study this Vata, Pitta, Kapha. You are going to deal with this. So this is your basic component which we are going to deal in Ayurveda physiology. And similarly in modern physiology, that is human physiology, we are going to deal with the normal functionings of different systems. So you know all that the body comprises of different organs, different systems, that is respiratory, digestive, central nervous system, and etc. So normal functioning of all these systems we are going to deal with. So why we are going to study Kriya Sharir is, here we are going to deal with normal functioning of all the organs, or we can say the normal functioning of the body. So if we know the normal physiology, then only we'll deal with the disease or pathophysiology of the body. So unless and until you know the physiology and normal functioning of body, you can't deal with the disease condition. So therefore we are going to study all these things in human physiology, or we can say Kriya Sharir. So hope you all going to enjoy this when you come to college. Thank you. Thank you, sir. Raviraj sir, do you want to add something from your side to the physiology course? No, sir, that's all. I think everything has been covered by Dr. Priya, and we will make students familiar with each and every concept as the time passes by. Yes, sir. Fine. Samhita from Samhita subject. Yes, sir. Shubha Madhyana Sarvebhya. Shubha Madhyana. Yes, sir. Myself, Dr. Pratibha Pandav, Assistant Professor in Sanskrit Sahita Siddhant Department. My HOD is Dr. Shilpa Khobragade ma'am,
Sanskrit teacher is Dr. Harsha Shende ma'am. Sanhita subject you have in your first year, second year, and final year also in your UG course. Sanhita means put together or to join together or union or collection. These are the ancient texts in the Vedas consisting of what you can say mantras or shlokas or prayers, etc. Now I am going to introduce Sanhita subjects. These are we will study it in first year BMS course. We have one paper of Sanskrit language with Viva. We have two papers of Padartha Vigyan, which means the fundamental principles of Ayurveda and quantum mechanisms with Viva, and another is a Sanhita Adhyayan, one paper of Sanhita Adhyayan with Viva. Thank you so much, sir. Guna? Yes, thank you, sir. So welcome again. I'm Dr. Shrikant Hadole, Assistant Professor from Department of Dravya Gun Vigyan. Till last subject, that is Sanskrit Sanhita Siddhanta, you have covered the first year subjects. You are going to study total 5 subjects distributed in 3 departments. Now from this Dravya Guna onwards, you are going to have the brief information regarding the subjects that you are going to study in second year onwards. So Dravya Guna is a subject which is directly related to the medicinal plants. आप सभी को पता है जड़ी बूटियां आयुर्वेद का एक अभिन्न अंग है. इसमें का एक दूसरा अंग है जो हम रसशास्त्र डिपार्टमेंट में नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जानेंगे, जो आपके मिनरल्स है और कुछ एलिमेंट्स है. लेकिन जो जड़ी बूटियां हम स्पेशली आयुर्वेद को कोरिलेट करते हैं, जो लोग लेमैन से कोरिलेट करते हैं, उस जड़ी बूटियों का संपूर्ण ज्ञान हम द्रव्य गुण विज्ञान में सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं. इसमें जब हम एकेडमिकली बात करते हैं 2 सब्जेक्ट्स, पार्ट 1 पार्ट 2 द्रव्य गुण होता है. पार्ट 1 इज रिलेटेड टू द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द्रव्य. व्हाट इज द्रव्य? आप जो भी चीज पढ़ने जा रहे हैं उसके जो सारे कंसेप्ट्स है वो आप पार्ट 1 में पढ़ेंगे. पार्ट 2 में आप जो मेडिसिन है, जो ड्रग्स है, उसको पढ़ने वाले. साथ ही में हम इसके रिलेटेड प्रैक्टिकल्स होंगे. एंड नेक्स्ट इज कंप्लीट फार्माकोलॉजी related to modern pharmacology. हम इस सारी चीजों को पढ़ने वाले. So that's all from Dravya Gun department. Thank you. Thank you very much, Dr. Shrikant sir. You are doing very hard work for the development of the college and all-round progress of the college. You are not only imparting the duties of your subject but of the administration also. I'm very much thankful to you. Next, Rashastra subject. From Rashastra, I think Dr. Jaiswal sir is with us. Yes, sir. Please go on. Good afternoon, respected principal sir. Madhyana. Madhyana sir. पहले तो सभी बच्चों का जुपिटर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में स्वागत है. मैं डॉक्टर दीपक जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर रसशास्त्र एंड वैशज्य कल्पना डिपार्टमेंट. सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है. मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैं भी यही कॉलेज का माजी विद्यार्थी हूँ. मैं 2004 बैच का माजी विद्यार्थी हूँ. 2010 में मेरा कंप्लीट हुआ है और मैं यही कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर बोल के ज्वाइन हुआ हूँ. ये मेरे लिए गर्व की बात है. हमारा सब्जेक्ट है रसशास्त्र एंड वैशज्य कल्पना. हमारे 2 पेपर है, रसशास्त्र और वैशज्य कल्पना. रसशास्त्र में अलग अलग घटक के हमने ये बनाए हैं. रसशास्त्र में रसशास्त्र का इतिहास है, परिभाषा है, अलग अलग प्रकार के हमें यंत्र पढ़ना है, अलग अलग प्रकार के मूषा, कोष्ठी, डिफरेंस प्रकार के पूट पढ़ना है, रस विज्ञान पढ़ना है. यानी मेनली पारद का मेन उद्देश्य क्या है और उसका किस प्रकार से हमें
औषधिकरण में उपयोग कर सकते हैं, ये हमें इसकी जानकारी हमें रसशास्त्र में पढ़ना है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि रसशास्त्र जो है, अभी आप फर्स्ट ईयर में जो रस पढ़ेंगे वो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये रस पढ़ेंगे। और सेकंड ईयर में जो रसशास्त्र पढ़ना है वो हमें पारद विज्ञान जो है, पारद के बारे में हमें ज्ञान लेना है, वो है रसशास्त्र। दूसरा है हमारा भैषज्य कल्पना। भैषज्य कल्पना में हमारे इसमें भैषज्य कल्पना के आधारभूत सिद्धांत कुछ बताए हैं, कुछ परिभाषा प्रकरण बताए हैं। उसके बाद में संधान, आसव, अरिष्ट, आपने सभी ने चूर्ण का नाम सुना होगा, सीतोपोलादी चूर्ण, आसव अरिष्ट के नाम सुने होंगे। तो हमें सभी प्रकार के आसव, अरिष्ट, चूर्ण, अवलेह, कल्पना, च्यवनप्राश आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो ये सब कल्पना हमें भैषज्य कल्पना में पढ़ना है। और वटी गुटी जो भी हम बनाते हैं ये हमें रसशास्त्र में उसका प्रयोजन, नियोजन, घटक द्रव्य, निर्माण विधि और कौन कौन से डिसीज में वो चलता है, इसका ज्ञान हमें ये रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना में हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना का हमारा सब्जेक्ट का है। थैंक यू सर। थैंक यू दीपक सर। मुझे लगता है जब विद्यार्थी आपके पास आएंगे तब आप उनको आज के टर्मिनोलॉजी में जो विद्यार्थी समझते हैं कि गुटी वटी जो है टैबलेट कैप्सूल, इस फॉर्म में ये डोजेस फॉर्म आजकल के विद्यार्थी समझते हैं। और जो रसशास्त्र से रिलेटेड साधारण रस है, उपरस है, महारस है, रत्न है, उपरत्न है, उसमें से जो भी द्रव्य है उनका जैसे आपने पारद का उल्लेख किया, उसको जैसे मर्क्यूरी कहते हैं, उसका सिनोनिम देके मॉडर्न सिनोनिम उसका क्या है, ये सब आप उनको डिटेल में पढ़ाएंगे। यस सर। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट इज निदान। may I request Dr. Sachin Borkar sir to introduce the subject? Hello. Good afternoon all. Myself Dr. Sachin Borkar, Associate Professor, belong to the subject Rog Nidan and Vikruti Vigyan. Am I audible? Yes, you are audible. Yes, you are audible. Okay. This subject students you will study in second year of BMS. I would like to introduce the name of the faculty members in this subject. First, HOD of the department, Dr. Subhash Wake sir. He is a professor, HOD, and also the principal of our college. He has a deep knowledge of subject, and you are, or even me also, very lucky to have such an intelligent person in our subject and in our college. As far as subject is concerned, the name of the subject is Rog Nidan and Vikruti Vigyan. Rog means disease and Nidan means diagnosis, whereas Vikruti Vigyan is pathology. In this subject, what we study all details about the cause of disease till the final diagnosis of disease. Also, we study diagnosis of disease done on the basis of clinical feature, pathological investigation, and pedological investigation. Pathological investigations are further subdivided into hematological investigation, biochemistry, microbiology, and serological. Whereas radiological investigation includes all X-ray, CT scan, MRI, etc. Students, we will have an opportunity to interact with the patient during your clinical posting, and this is the first entry in the clinical world. In this subject, we study all aspects of diseases from causes to the final diagnosis, and then only we are able to treat the patient accurately. So for treating purpose, your diagnosis must be perfect. And in this subject, we will study the disease and their diagnosis in all ways. Thank you and welcome all dear students in Jupiter family. Thank you, sir. Thank you, Sachin sir, for introducing the subject precisely. Next, I will call Agatandra department. Good morning, my dear students. I am audible. Yes, you are audible.
Good morning, all my dear students. I am Dr. Ketki Nirmal, Assistant Professor at the Department of Agattantra. This is your second year subject, and the full name of this subject is Agattantra Vyavhar Ayurved Evam Vidhivat. This subject comprises the knowledge of toxicology, forensic medicine, and medical jurisprudence. In the subject of toxicology, we will study the various poisons, their origin, their manifestations, their mode of action, complications, its management, means its treatment, their medical legal aspects, their PM examinations in detail. Okay, and these poisons are vegetables poisons, snakes, scorpion bites, etc. We are going to study in this. In the next part, in forensic medicine and medical jurisprudence, we are going to study the various types of death, hanging, rape, murder, fingerprinting, drowning, injury, burn, etc. And their related laws, what are the punishments, various acts, various IPCs, various CRPCs. Okay, so we have to deal with all this, and we have to study this in detail in second year. And also we have to visit observation of PM in GMC Nagpur in second year. We will observe there how postmortem is conducted, and we will have to visit for court for observing the court procedures. So thank you, students, and again welcome to the Jupiter Ayurved Medical College. Thank you. Thank you, madam. Next from Sastavritta subject. Rupali madam is there? Yes, sir. Am I audible, sir? You are audible. Okay. Good afternoon, one and all. Shubha Madhyanaha. First of all, I want to congratulate all the students to be here in JMC, best college in Nagpur with great faculties. Myself, Dr. Kripali Jangvi, Assistant Professor in Swastha Vritta Department. The HOD of department is Dr. Mamta Revatkar ma'am. Students, you will go through this subject in your second year of your course. The term Swastha Vritta consists of two words, Swastha plus Vritta. Swastha means healthy and Vritta means conduct, that is acharan. The conduct which we should perform to be healthy is a Swastha Vritta. It emphasizes on following a disciplinary routine to attain optimum health. Swastha Vritta relates to preventive social medicine in modern allopath subject. But our subject is more than that. It deals not only with the physical health, but also with the social, mental, and spiritual health. In this way, it appears to be unique. The Ayurveda is an ancient science, and it aims Swasthasya swasthya rakshanam, aturasya vichar prashanam. That means to maintain the health of the healthy person and to cure the disease of the ill one. So the first part, according to our science, comes Swasthasya swasthya rakshanam, means to maintain the health. And for that, Dinacharya, Rutucharya means daily regimen, seasonal regimens are included in the subject. Other parts comes about diseases. In this, communicable diseases, non-communicable diseases are studied in the subject. Non-communicable diseases are the big challenges. Nowadays, to how to manage and prevent this lifestyle management is given in our subject. The subject also deals with yoga for maintaining the mental and spiritual health. Other alternative therapies, naturopathy, acupuncture, and many more are included in the subject. This is a short introduction of Swastha Vritta. You will learn in brief in your second year. All my best wishes to you and welcome to the JAMC. Thank you. Thank you very much, madam, for introducing your subject so nicely. Now, next in the series, may I call upon the faculty of Stri Roga to introduce their subject? I think Kalyani madam is here. Yes, sir. Yes, sir. I am audible. Yes, you are audible. Shubha Madhyana Acharya. And welcome to all students, all first year student in JMC College and family. I am Dr. Kalyani Pendam. I am lecturer in Jupiter Ayurvedic Medical College, and I am teaching the Prasuti Tantra and Stri Roga subject in third year.
in BMS course. Okay, and Prasudi Tantra and Stri Roga subject is the Prasuti. Stri Rog means all diseases. means स्त्री रोग में जो diseases आते हैं सभी, every lady suffering from any disease, for example PCOD. PCOD में जो problems आते हैं जो स्त्रियों को, जिसमें अच्छी तरीके से चिकित्सा स्त्री रोग प्रसूति तंत्र सब्जेक्ट में बताई गई है। और उसके बाद में आप मानसिक आहार, मतलब गर्भिणी को, मतलब जो ANC रहती है एंटीनेटल केयर, उसको किस प्रकार का आहार लेना चाहिए। और उसके बाद में वंध्यत्व मतलब इनफर्टिलिटी की भी आजकल सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे हैं, तो उसमें भी किस प्रकार की चिकित्सा अपन कर सकते हैं, इस प्रकार का ब्रीफ नॉलेज या डिस्क्रिप्शन अपने प्रसूति तंत्र स्त्री रोग विषय में दिया गया है। और हर एक प्रकार की डिसीजेस, मतलब फॉर एग्जांपल सूतिका, PNC जो पेशेंट रहते हैं, डिलीवरी के बाद के जो पेशेंट रहते हैं, उनको किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, इस प्रकार का अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन हमारे सब्जेक्ट में दिया गया है। सो थैंक यू सर। Swapna madam is there. Please introduce your subject, madam. Your voice is not audible. Hello, now sir. Hi. Hello. Audible. Hello. Am I Yes, audible? audible. You go on, please. Myself, Dr. Swapna Gupta, Assistant Professor in the Department of Biology. We will study this subject in third year BMS. HOD of the Biology Department is Dr. Amit Deshmukh sir. As the name of the subject Biology, in this subject we will study all the details about Bal and Kumar diseases. We have only one paper of Biology, which is divided into part A and part B. In part A, we study about Kumar Bhutya Parichaya and Balak Parichaya. That is up to the age of 16 years of Balak. We study Kumar Parichaya. And in part B, we will study about the Samanya Chikitsa Siddhant of the disease of the Balak. तो बाल रोग में हम जो सब पढ़ने वाले हैं, उसमें सबसे मेन है कि षोडश संस्कार, इसमें की जो 8 संस्कार है, इसके बारे में हम बाल रोग में पढ़ने वाले हैं। देन कुमार गुप्त की जो परिचर्या है, कुमार का नाम है कुमार धर्म शील दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानांच व्याधि नाम शमनार्थ। दैट इज कुमार धर्म मीन्स न्यूट्रिशन। कुमार का न्यूट्रिशन जो है वो चरक बहुत और सुश्रुत ने जो बताया है, कश्यप ने बताया, इसमें किस कब क्या क्या खाना है, कैसे कैसे बालक को हमको देना है, इस बारे में हम संबंध। उसके साथ ही उसने बताया धात्री दोष अक्षय दोष संशोधन। मीन्स ये हमारा जो फॉर्मर है, इसका एक स्पेशलिटी है कि हमारे आयुर्वेद में हम बालक को अगर कोई डिसीज होता है तो हम वो माता को उसके लिए ट्रीटमेंट देते हैं। माता के स्तन्य के थ्रू वो जो औषधि है वो बालक तक को जाती है। तो ये हमारे आयुर्वेद की स्पेशलिटी है कि हम किस प्रकार से बालक की चिकित्सा कर सकते हैं। धात्री के शील दोष संशोधन। देन है दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानांच, यानी दुष्ट स्तन्य से उत्पन्न होने वाले कृमि और ग्रह से उत्पन्न, ग्रह मीन्स हम उसको कृमि भी बोल सकते हैं, से उत्पन्न होने वाले व्याधि के बारे में उसको कैसे ठीक किया जाए, इस बारे में हम कुमार गुप्त में पढ़ेंगे। दूसरा है कि काश्यप संहिता जो मेन है, जिन्होंने कुमार गुप्त को पहला यानी जो आयुर्वेद के जो 8 बताया गया है, उसमें काश्यप संहिता ने सबसे श्रेष्ठ माना है कुमार गुप्त को, पहला स्थान दिया है कुमार गुप्त। तो ये काश्यप संहिता में हम कुमार गुप्त के बारे में डिटेल में हमको सारी नॉलेज मिलेगी। और कुमार गुप्त का और एक ये जो है हाइट इंक्रीमेंट, यानी हम आयुर्वेद में हाइट कैसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं 16 वर्ष के या फिर 18 वर्ष के बच्चों की, ये हम बाल रोग में आयुर्वेद के थ्रू हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि हाइट इंक्रीमेंट को हम क्या ले सकते हैं। आयुर्वेद में ये बहुत अच्छा है। देन दूसरा है सुवर्ण प्राशन। सुवर्ण प्राशन संस्कार के थ्रू हम IQ और EQ को कैसे बढ़ाया है, शुद्धधर बोला है। 6 मंथ तक के हमने अगर सुवर्ण प्राशन संस्कार किया तो बालक शुद्धधर होता है, उसका EQ भी बढ़ता है, IQ बढ़ता है। तो इसके बारे में हम कुमार गुप्त में जानेंगे। देन अलग अलग जो डिसीज होते हैं, जैसे कृमि हो गया, शुष्क कास, देन CP चाइल्ड, पोलियोमाइलिटिस, इसमें जो मॉडर्न की जो
ये है लिमिटेशन है, इसके परे जाकर हम आयुर्वेद में ट्रीटमेंट देते हैं। और सिटी चाइल्ड हो या पोलियोमाइलिटिस हो, इसमें टिक्टक्षीर बस्ती, देन सर्वांग स्नेहन शोधन, इसके द्वारा पेशेंट को बहुत अच्छी रिलीफ मिलते हैं। मॉडर्न के जो लोग हैं, जैसे मॉडर्न के जो आयुर्वेद की ट्रीटमेंट देते हैं, वो भी आयुर्वेद के ही औषधियों को और तेलों को यूज करते हैं। मला अश्वगंधा तेल हो, ये इससे बच्चों की भूख बढ़ती है, तो ये बहुत अच्छा है, आयुर्वेद का एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन यूनिक चिकित्सा में बहुत लिमिटेशन है, सिर्फ आजकल टैबलेट देते हैं 6 नंबर, लेकिन अगर हम यूनिक की चिकित्सा में बस्ती देते हैं तेल की और तो इससे भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलता है। तो हमें सबसे पहले है कि हम आयुर्वेद में आए हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में जो आए हैं, तो हमको आयुर्वेद पर विश्वास है कि नहीं, ये देखिए हमको आयुर्वेद पर विश्वास होना चाहिए। आयुर्वेद से ट्रीटमेंट बदले में ठीक होते हैं, ये हमारे में विश्वास आया है, तो हम आगे चलकर बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दे सकते। थैंक यू, ऑल माय बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू मैडम। नेक्स्ट काय चिकित्सा डिपार्टमेंट। Good afternoon, students. Am I audible? Yes, you are audible. Myself, Dr. Vaishali Mishram, Assistant Professor in Kai Chikitsa Department, and our HOD is Dr. Sangeeta Gupta, ma'am. This subject you will be taught in final year. It is the combination of two words, Kai Chikitsa. Kai means body and Chikitsa means treatment procedure. Kai Chikitsa is the treatment of physical and psychological diseases, and most of the bodily disease are the result of the disorders of Agni or metabolism. It can therefore be labeled as internal medicines. So we have treated the bodily mechanism or metabolism in the final year subjects, that is Kai Chikitsa. Thank you all. Karma subject. I hope our charming professor Dr. Amol Khatri will introduce his subject precisely. Will cover little part of Kai Chikitsa also. Yes sir. Yes sir. Suprabhatam, Shubh Madhyana everyone. Shubh Madhyana. Sir, please let me know, is my slide visible or not? Visible. Okay. तो सभी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में अभी एडमिट हुए हैं, सबको जुपिटर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में सबका स्वागत है। Myself, Vaidya Amol Ganeshdas Khatri. I am associate professor in Kai Chikitsa department, but I have been given a responsibility to introduce this Panchakarma subject to all of you. Now, this Panchakarma, the name itself suggests that it is composed of two terms. First is Pancha and second one is Karma. Pancha stands for 5. Pancha means 5 and Karma is procedure. So there are basic 5 procedures which are included in this subject. There are so many procedures, but basic there are 5 procedures. What are they? This is first one is Vaman, second one is Virechana, next is Basti, next is Nasya, and the fifth one is Rakta Moksha. ये 5 नाम याद कर लीजिए अभी से, क्योंकि ये बेसिक है और आपको आयुर्वेद की जितनी भी ट्रीटमेंट करना है वो ट्रीटमेंट भी इन बेसिक पंचकर्म प्रोसीजर पे ही आधारित रहेगी। इसलिए 5 नामों को अभी से आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। कौन से हैं? वमन, विरेचन, बस्ति, नस्य एंड रक्त मोक्ष। नाउ देयर आर बेसिकली 2 मेन टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट। द फर्स्ट वन इज शोधन ट्रीटमेंट एंड सेकंड वन इज शमन ट्रीटमेंट। इस शोधन ट्रीटमेंट में पंचकर्म, पंचकर्म जो होता है उसी को शोधन बोला जाता है। शोधन का मीनिंग क्या होता है? बॉडी में जो बढ़े हुए दोष है, एग्रीवेटेड दोष है, उनको बॉडी से बाहर निकालना। दिस इज कॉल्ड एज शोधन। एंड व्हाट इज शमन? बढ़े हुए दोषों को शरीर में ही दबा के रखना। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जैसे आप ऊपर से हाथ से दबा रहे हो, उसी तरह से मेडिसिन से हम इन बढ़े हुए दोषों को शरीर के अंदर ही दबा के रख रहे हैं, दैट इज शमन। और अगर उनको शरीर में से बाहर निकाल रहे हैं, दैट इज शोधन। दिस शमन ट्रीटमेंट मीन्स ओरल मेडिकेशंस। जो हम जनरल ओरल मेडिकेशंस कर लेते हैं
in the form of tablets or capsule or liquids. These are Shaman treatment. And Shodhan treatment, these are 5 Shodhan treatments: Vamana, Virechana, Basti, Nasya and Raktamoksha. Now we all know that body is composed of 3 main dosha: Vata, Pitta and Kapha. Vata can be correlated with air, Pitta with fire and Kapha with water. Now, in the body, Kapha is situated in the upper part of body. We can see in the chest. Kapha जो होता है chest में normal उसका location होता है. Pitta जो होता है, it is located mainly in the middle part of the body. And Vata is located in the lower part, or we can say the large intestine or the intestines. So Kapha जो होता है ये ऊपर के भाग में, Pitta जो होता है ये middle भाग में, और lower part में कौन होता है? Vata. इस कफ दोष, अगर हम पंचकर्म मतलब शोधन प्रोसीजर समझ रहे हैं, तो इस कफ दोष को निकालने के लिए, शरीर में से निकालने के लिए प्रोसीजर की जाती है जिसको बोला जाता है वमन. वमन मींस एमेसिस. We have to remove this aggravated kapha dosha through emesis, through induced emesis. So there are various protocols how this woman should be carried out. We will discuss this in our last day session. Then इस पित्त को अगर शरीर में से निकालना है तो एक प्रोसीजर होती है जिसका नाम है विरेचना. और वात को अगर शरीर में से, एग्रीवेटेड वात को अगर शरीर में से निकालना है तो उसकी एक ट्रीटमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज बस्ती. और वी कैन इजीली रिमेंबर विद द नेम ऑफ एनिमा. एनिमा हमने सबने सुना है, उस एनिमा को ही हम आयुर्वेद में बस्ती बोलते हैं. तो कफ को बाहर निकालने के लिए वमन, पित्त को बाहर निकालने के लिए विरेचन और वात को बाहर निकालने के लिए बस्ती. ऐसे 3 मेन प्रोसीजर है. तो हमने अभी देखा शोधन में बस्ती वात के लिए यूज की जाती है, विरेचन पित्त के लिए यूज किया जाता है और वमन कफ के लिए यूज किया जाता है. बट आप 2 और प्रोसीजर देख रहे हैं यहाँ पे कि रक्तमोक्षण भी है और नस्य भी है. ये रक्तमोक्षण जो है ये हमारे बॉडी में जो दूषित रक्त है, खराब हुआ रक्त है, ब्लड है, इसको बाहर निकालने के लिए जो किया जाता है दैट इज रक्तमोक्षण, और वी कैन सी दिस ब्लड लेकिंग प्रोसीजर. और नस्य जो है, हेड में अगर कोई दोष पड़े हुए हैं इनको ठीक करने के लिए नस्य प्रोसीजर यूज की जाती है. उसी तरह से शमन अभी हम डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि हम शोधन पे फोकस कर रहे हैं. अब यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं रक्तमोक्षण प्रोसीजर और नस्य प्रोसीजर. रक्तमोक्षण वी कैन डू बाय अप्लाइंग लीचेस टू द बॉडी, और वी कैन आल्सो रिमूव द ब्लड थ्रू द सिरिंज, और वी कैन से थ्रू अ कैथेटर. दिस इज रक्तमोक्षण प्रोसीजर. और नस्य प्रोसीजर क्या होता है? टू pour the medicated oil through nose so that it can cure the diseases in your head. So ये होगी रक्तमोक्षण और नस्य प्रोसीजर. इसको हम सिंपल एक इमेज से समझ सकते हैं. इमेजिन कीजिए जो डैम है, ये डैम जो है ये हमारी बॉडी है, और ये जो पानी है ये पानी में हमारे बढ़े हुए दोष है. इस डैम के जो ये गेट्स है, इस गेट्स को खोल देना. इस गेट्स को खोल देने से क्या होगा? ये जो पानी है ये पानी बाहर निकल जाएगा. उसी तरह से इस बॉडी में से, बॉडी में के गेट्स को खोलना, इसी को शोधन चिकित्सा बोला जाता है, जिसमें हम शरीर में बढ़े हुए दोषों को आराम से बाहर निकाल दिए जाते हैं. तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ पंचकर्मा. और ये जो पंचकर्मा प्रोसीजर्स है ये हम हर प्रोसीजर को लास्ट डे 21 मई को डिटेल समझने वाले हैं, इसलिए आप वहां पे उस लेक्चर को मिस मत कीजिएगा. थैंक यू सो मच. Vibrant Amol sir, you have introduced your subject precisely. Next in the series is Shalya, who is from Shalya department. Dr. Avinash Bharti is there. Shrikant sir, there some noise is going on. Could you please shut down that? Shrikant sir, अथर्व प्लीज हाँ म्यूट योर ऑडियो. Avinash Bharti sir is there. Yes sir. Dr. Bharti sir to Shubha Madhyana to introduce his subject Shalya Tantra. Please introduce your subject. Am I audible, sir? Yes, you are audible. Shubha Madhyana, sir. Shubha Madhyana. Hello, everyone. I am Dr. Avinash Bharti, Assistant Professor in Shalya Tantra Department, and I am going to introduce you regarding Shalya Tantra Department, the Department of Surgery. You will study this subject in your final year. We have a very expert
and knowledgeable person as a HOD of Shalya Tantra department, and she is respected Dr. Veena Kulkarni ma'am, HOD and professor of the department. So in this subject, you will study about various surgical procedures and parasurgical procedures like Rakta Mokshan, Jalokaucharan, Agni Karma, and Shara Karma. Also, you will study about various instruments which are used in a surgery. Here, we will study about sterilization and anesthesia, as well as practical knowledge of various surgical procedures like surgery of hydrocele, surgery of fistula, surgery of hernia, etc. The original text of Sushrut, Acharya Sushrut, that is Sushrut Samhita, has detailed discussion on the exhaustive range of surgical methods, that is method of how to deal with various type of tumors, internal and external injuries, type of tumors, various fractures, complications during pregnancy, and many more. So we all discuss and learn the surgical procedures and parasurgical procedures in modern view also, and an ancient view in your final year. Thank you. Okay, fine. The last remained is the Shalakya Tantra subject. Khode, I can see Khode sir is there. This is a jolly person. May I request Khode sir to introduce his subject, please? Good morning, sir. Good morning, all students. Warm welcome to Jupiter Ayurveda College. Myself, Dr. Vilas Khode, Associate Professor and HOD of Shalakya Tantra Department. We will learn subject Shalakya Tantra. Shalakya Tantra includes the diseases of Urdhva Chaturgat Rogas, which will include Netra Rogas, ophthalmic diseases, ear, nose, and throat diseases, and dental diseases. Also, we will learn Sanhita. Shalakya Tantra is mainly explained in Sushrut Uttar Tantra. We will also learn from Sushrut Sutrasthan, Charak Sanhita, Kashyap Sanhita, Sharangdar Sanhita. The main ophthalmic diseases, which include cataract, glaucoma, and their surgeries, we will learn. Also, we had recently introduced instruments in department, slit lamp, chair unit, Ishara chart. We will also learn modern techniques of eye examination related to ophthalmic and also ear, nose related diseases. Thank you. Thank you, Khode sir. I hope my entire teaching faculty had introduced their subjects very well. Now it's almost getting 1 o'clock. Students, if you have any queries, you may please ask. If you have not understood anything about anything up till, or about you want to know more about any subject, we can discuss for 10 minutes, and then we will have a lunch break. 7-8 minutes we are having, and we will meet after that. Shikant sir, are we on time? Yes, sir. Do we have some time? Do we have some time to discuss? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So boys, if you have any queries, you can please go forward. I think our session is up to 1:30, and we have ample time now. If you haven't understood anything about any subject, if you want to know anything more, you may please ask. Then we will have a lunch break,
and meet again after lunch break at 2:30. Hello, sir. Hello. Yes, Hello. madam, you please introduce your subject. अहमपि वदतु इच्छामि. Hello. वदतु. सर्वेभ्यः नमो नमः. अहम वैद्या हर्षा शेंडे अस्मि. सभी का हमारे जुपिटर आयुर्वेद कॉलेज में स्वागतम. और शायद से कुछ स्टूडेंट का संस्कृत में भी होगा, किसी का नहीं भी होगा. तो संस्कृत में हम लोग जो वदतु संस्कृतम के क्लास इसे हमने इंक्लूड किए हैं, उसमें 15 डेज का जो प्रोग्राम है, तो उसमें सबसे पहले हमको मीन्स इंट्रोड्यूस होना चाहिए. जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स रहते हैं तो वो सभी इस सब्जेक्ट से परिचित है, बट जो स्टेट के रहते हैं या किनका जिन बच्चों का ऑप्शन सब्जेक्ट नहीं रहता है, तो उनके लिए संस्कृत जो है सब्जेक्ट के जो वर्ड्स है, और हमारे आयुर्वेद के काफी सारे सब्जेक्ट जो है मीन्स ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट श्लोक में है. तो संस्कृत आप के बेसिक जो वर्ड्स है वो आपको परिचित होना चाहिए. इसलिए सीसीएम ने लास्ट ईयर से 15 डेज का करिकुलम प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है. तो इसमें फर्स्ट डे में हम लोग जब पठ्यतु संस्कृतम में पढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग में जैसे हम कोई भी जब लैंग्वेज पढ़ते हैं, चाहे इंग्लिश, मराठी और हिंदी, एनी लैंग्वेज, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. तो इसमें भी हम लोग जब कल कल्याणी काड़े मैम आएंगे, वो आपको वो सभी वर्ड्स मीन्स करवाएंगे और जो सिलेबस है वो कवर करवाएंगे. तो वो कुछ जो पॉइंट्स है मैं वो आपको बताती हूँ कि उसमें क्या क्या है. उसमें परस्पर परिचय में आएगा भवतः नाम किम भवतः, ये हम लोग पुल्लिंग जो शब्द है उसके लिए यूज करते हैं. भवतः ये स्त्रीलिंगी शब्द के लिए यूज करते हैं. तो हम लोग जैसे इंग्लिश में व्हाट इज योर नेम, या आपका नाम क्या है, तो जैसे भवत पुल्लिंग में अगर हम बोलना चाहिए तो भवतः नाम किम भवत्याः नाम किम, इस तरह से. देन मम नाम हर्षास्मि, मम नाम रमेशः अस्मि, इस तरह से आंसरिंग करते हैं. तो वो सब इंट्रोडक्शन करके मैम आपसे कल करवा लेंगे. फिर सेकंड इसमें में सह, सा, एषः, एषः मीन्स दूर वाला जब रहता है तो हम सह कहेंगे. पास में अगर कोई रहता है तो हम लोग एषः, जैसे वो है, ये है. स्त्रीलिंगी शब्द रहते तो एषा, पास में रहते तो एषा कहते हैं, दूर में रहेंगे तो सा. इसी तरह से नपुंसकलिंग में हम लोग एतत्, तत् और एतत् इस तरह से कहते हैं. देन उसके बाद में अस्ति नास्ति मीन्स अगर कोई चीज है, जैसे कि कूपी है, तो उसमें जल है तो जलम अस्ति, नहीं है तो नास्ति मीन्स अस्ति नस्ति. इस तरह के वर्ड्स हम बेसिक जो संस्कृत के जो शब्द है हम लोग वो कल फिर से रिवाइज करेंगे. देन अस्ति और संति, तो एक वचन में अगर शब्द रहता है तो हम लोग अस्ति कहते हैं, बहुवचन में संति. उसके बाद में अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, अन्यत्र और एकत्र, इसके बारे में हम लोग प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे कल. तो उसमें अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ और सर्वत्र मीन्स सभी जगह. तो इसके हम लोग 1 by 1 कल मैम आपको एग्जांपल्स देके समझा देंगे. देन नेक्स्ट है कृपया, स्वागतम, जो हम लोग डेली के शब्द यूज करते हैं. वेलकम, एक्सक्यूज मी, तो उसमें क्षम्यताम कहना है. देन जैसे पूरे मीन्स सफिशिएंट, तो फिर पर्याप्तम हो गया मीन्स तो मास्तु, चिंता नहीं करना तो चिंता मास्तु. किसी को थैंक यू कहना है तो धन्यवाद. इस तरह के शब्द आपको कल से पढ़ाए जाएंगे 4 डे कंटिन्यूस. उसके बाद में संख्या प्रयोग 1 से लेके 100 तक. फिर उसके बाद में समय परिचय मीन्स के घड़ियाल में कितने बजे, वो किस तरह से हम लोग परिचित करेंगे, तो समय परिचय रहेगा. उसके बाद में दिन से सोमवार मंगलवार, इसको संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं. उसके बाद में आज, कल, परसों, ये जो वर्ड्स है उनको क्या कहते हैं, श्वः, परश्वः, इस तरह से कल हम लोग कल से कंटिन्यू 4 डे पढ़ेंगे. उसके बाद में ये जो सब टॉपिक पढ़ा है उसका हम लोग प्रश्न प्रकरण देंगे. उसमें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और वो आपको आंसरिंग करना है. और अभी ऑफलाइन अगर सेशन रहता था तो हम लोग अभिनय वगैरह करके ड्रामा वगैरह भी कंडक्ट किया रहता था, लेकिन हमारे पास टाइम कम है और हम लोग सभी ऑनलाइन है. फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे कि लास्ट डे जब सेशन रहेगा तब हम लोग एक संस्कृत का ड्रामा जरूर रखेंगे. देन पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, ऊपरी, अधः, अंतः, बहिः, ये सभी शब्द को परिचय यूज कब करना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फिर वर्तमान रूप, अस्ति, संति, भूतकाल, भविष्यकाल, इसमें क्या कहते हैं हम लोग,
और उसके साथ ही षष्ठी विभक्ति, देन यदि तर्हि, ये जो वर्ड्स है मीन्स वाक्य में प्रयोग करना। तो ये सब बेसिक जो दिया गया है, शरीर अवयव, शरीर के नाम क्या है, देन संख्या, लिंग अनुभेद, विशेषण, विशेष भाव, इसके बारे में सब हम लोग डिस्कशन कल से स्टार्ट करेंगे 4 डे। और मैम का सेशन होने के बाद में आपको मैं ही संस्कृत पढ़ाने वाली हूँ और जो भी डाउट्स रहेंगे वो हम तब क्लियर कर लेंगे। अभी आपका संस्कृत इजी होना चाहिए, इसलिए वदतु संस्कृतम के क्लास कल से हम लोग 4 डे, संस्कृत भारती के मैम है डॉक्टर कल्याणी खाड़े मैम, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जिससे आपको थोड़ा इजी वे लगेगा और संस्कृत से डर मीन्स निकल जाएगा आपके मन से, और फिर बाकी थ्रू आउट ईयर तो मैं आपको पढ़ाऊंगी। ओके, धन्यवादः, पुनर्मिलावः, सर्वेभ्यः नमो नमः। धन्यवादः महोदयः, बहु उत्तमम्। If again I repeat, if you are having any queries about students, you can ask our learned faculties for the session. Up till now, what we have covered up till. If you are having any queries about anything, any word which you are not understood, you want to ask about, because you are new to this all this terminology, and the basic intention behind this carrying out this whole exercise of transitional program is to make you aware about the terminologies first, so that this transition takes place gradually. So some of you can come forward and may ask. So in first year, you are going to study the Sharir Rachana, Sharir Kriya, and Sanhita subject. Sharir Rachana corresponds to the learning of human anatomy, Sharir Kriya to learning of human physiology, and Sanhita is the old texts written by the ancient acharyas, on the basis of which the whole the building of Ayurveda stands. There you will learn many things. So you can ask regarding these 3 subjects. So please feel free to ask anything, and so that the formal conversation starts between us, and you get well versed with the subject, not well introduced with the teachers also. So one of the important quality of the doctor, I always say, is the Purva Vibhashi, taking the initiation first, not waiting for others that who will speak, who will talk. Start from yourself. At least you can put a curiosity, what you are going to learn. Just give up the reluctance and
just start a conversation, informal conversation. Have you got anything about anything whatever that has been told by various faculties up till now? Voice? Shrikant sir. Shrikant, dear Shrikant sir, can you hear me? Shrikant sir, are you there? Yes, sir. I think the students are very reluctant to put their opinion, and maybe they are waiting for others to take the initiation. So in between, in short, in few words, you can tell them about explain about the course, how many years it comprises of, and in which year, what are the subjects they are going to learn. ओके श्योर सर। मैं समझ रहा हूँ शायद सारे स्टूडेंट्स अभी एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, मॉर्निंग से 10:30 बजे से स्टार्ट सेशन किया है। तो मैं चाहूंगा कि शॉर्ट में समराइज करूँ आपके लिए। सबसे पहले अगर आपके किसी के भी मन में डाउट है कि अगर आपके हेलो, यस, am I audible? Yes, you are audible. Close that, Abhishek. Yes. Mute that, Abhishek. ओके, तो अगर आपके मन में ऐसा कोई भी डाउट है कि क्या आप संस्कृत के साथ कोप अप कर पाएंगे या क्या आप आयुर्वेद के स्टडीज को आगे कंप्लीट कर पाएंगे, तो इसके बारे में कोई डाउट मत रखिए। जैसे आपने आपके सभी सीनियर स्टूडेंट्स के पर्सनल ओपिनियन जाने, उसी प्रकार कुछ ही दिनों में आपके भी ओपिनियंस होंगे कि इट्स रियली सिंपल। जस्ट आपको आपके सिलेबस के साथ रहना है, आपके जो भी टीचर्स है, मेंटर्स है, उनके साथ रहना है। आप इजीली आपके जो भी सिलेबस है उसको धीरे धीरे कोप अप कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज, आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो इसी साल से आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। लास्ट ईयर तक जो आपका बीएमएस का डिस्ट्रीब्यूशन था वो 4 सालों में था, फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर 1 year ईच, एंड देन लास्ट ईयर 1.5 years। अभी इस साल से आपके जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो 3 सालों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर, 1.5 year ईच। जिस प्रकार अपने सभी सब्जेक्ट्स का आपने डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोडक्शन हुआ, वो सब्जेक्ट्स आपके रिस्पेक्टिव ईयर्स में आपको पढ़ने हैं। उसके बाद 1 साल का आपका रोटेटरी इंटर्नशिप प्रोग्राम रहेगा, और फिर आपका जो डिग्री है वो आपको प्रदान किया जाएगा। इस कंप्लीट करिकुलम में आपको थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के थ्रू जाना पड़ेगा। काफी सारे इंस्टीट्यूट्स को हम विजिट करेंगे, कुछ हमारे एजुकेशनल टूर्स होंगे। इसके अलावा जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज है, हमारे कल्चरल एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, इसके थ्रू हम जाएंगे। एनएसएस हो या एनसीसी के हो, इसके एक्टिविटीज भी हम करेंगे। इसके अलावा अगर आप में से कोई इनिशिएशन लेना चाहता है, कोई और अदर एक्टिविटी जो इंटरेस्टिंग हो और फ्रूटफुल हो सभी के लिए, उस सभी के थ्रू हम जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपका एक कंप्लीट बीएमएस का कोर्स रहेगा। जस्ट बी अश्योर्ड दैट आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला दिन है, शायद आपको सभी नए टर्म्स है,
बहुत सारा नए वर्ड्स का बम्बार्डिंग हुआ तो आपको लगता हो कि हम कहाँ आ चुके हैं, ये क्या सुन रहे हैं, डोंट वरी, विद इन the 3 to 4 days by the end of this curriculum, you will be much comfortable with this subject and this terminologies. So that's all from my side. I think I request sir, so we can end this session here. Over to you, sir. So this whole BMS course is of 4.5 years duration. In first year, you will read the Sharir Rachna, Sharir Kriya, and the Ashtang Hridaya. In second year, you will have subjects like Rog Nidana, Dravya Guna, Rasa Shastra, Agat Tantra. If the if the old pattern is there, it will be of 1 year. If the new pattern is implemented, I suppose the new pattern is implemented from your batch only, but that is 1.5 year. If that is the thing, then in final year you will have Kai Chikitsa, Panchakarma, Strirog, Balrog, Shalya, and Shalakya Tantra. So these are the subjects you are going to study. So with this, we will stop here because all are hungry, and we will meet after the lunch break. So, Shrikant sir, you can end the meeting now.